Hello, my dear students. मैं प्रसाद सर from N Infinity Info Solution. Welcome you all for this session. इस सेशन में बेसिक्स ऑफ पॉइंटर्स को खत्म करने के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में मूव करेंगे एंड दैट इज पॉइंटर्स एंड अरेज. Maximum questions, maximum problems in technical tests you will find with respect to arrays and pointers. But before moving directly into the pointers used for array handling, what we are going to discuss is अरे का पूरा बेसिक्स पहले कवर कर लेते हैं, राइट? तो इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीड ऑफ द अरेज एंड अरे के 3 लाइफ साइकिल स्टेजेस है, डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड यूज. उसमें से पहला लाइफ साइकिल स्टेज खत्म करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशनल अरे. सो बहुत ही थरो डिस्कशन करने वाले हैं सो दैट व्हेन वी वांट टू हैंडल द अरेज विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स, हम लोगों को अरे के सारे बेसिक्स पता होने चाहिए, राइट? सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट what is the need of array and how we can go on declaring one dimensional array with respect to C and C++ program. So let's move into the detailings. पहले जानते हैं इस array का need क्या है, and we know that once we get to know the need of any entity, उसके use को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से appreciate कर पाएंगे, right? So for example, in a programming, अब तक के experience के हिसाब से we know that अगर मुझे किसी student का roll number को handle करना है, so how I can manage that in the programming with respect to C and C++? तो I'll be using integer type का data and I'll be mentioning it as what? Roll number. Right. So I'll be using this variable. Roll number is a variable of type integer जिसके अंदर उस स्टूडेंट का रोल नंबर को स्टोर करेंगे, right? But assume that I have the need of storing the roll number of 100 students. तो उस केस में अगर प्राइमरी डेटा टाइप के साथ हम लोग चलते हैं, सो रोल नंबर 1 एक स्टूडेंट का रोल नंबर को स्टोर किया, सो आई गो विथ इंटीजर रोल नंबर 2. सेकंड स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर किया, इंटीजर रोल नंबर 3. थर्ड स्टूडेंट के रोल नंबर को स्टोर करने के लिए वन मोर वेरिएबल. ऐसे कितने वेरिएबल की मुझे जरूरत है? 100 डिफरेंट वेरिएबल्स आई नीड टू वर्क ऑन. एंड उस समय उन 100 वेरिएबल्स को अलग अलग नाम के साथ मैनेज करना एंड प्रोग्रामिंग में यूज करना, इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस. तो कितना बढ़िया होता अगर ये सारे के सारे 100 रोल नंबर हम लोगों को एक यूनिट में मिल जाए, मतलब एक साथ मिल जाए, एंड दैट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय दिस पर्टिकुलर एंटिटी अरेज. तो मुझे अगर किसी सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है तो उस केस में C एंड C++ में हमको हेल्प करने वाले हैं अरेज, राइट? सो यहाँ पे अरे के डेफिनेशन के हिसाब से इफ वी गो अहेड, सो लेट अस सी लाइक हाउ इट कैन बी डिफाइंड. सो अरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट्स. नाउ वन वेरी स्पेसिफिक एंटिटी इन द बिगिनिंग ओनली आई वांट टू क्लियर. डेटा एलिमेंट्स अपने पास कौन कौन से टाइप्स के हैं? सो वी हैव द डेटा एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी डेटा टाइप्स and what? Secondary data types. I hope you must be remembering all those aspects, right? So primary data type में 3 subtypes. चलो बताओ कौन से हैं? So those are character, integer and what? Float. And secondary data type में we have pointers, then we have arrays, then we have structures, enum, union, almost many of them, right? Okay. So character के अंदर एक subtype, integer के अंदर 3 subtypes एंड फ्लोट के अंदर 3 सब टाइप. कौन सा है? याद आ रहा है क्या? यस. कैरेक्टर के अंदर कैर, इंट के अंदर शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, एंड फ्लोट के अंदर फ्लोट डबल एंड लॉन्ग डबल, राइट? सो अरेज में वी कैन हैव द कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ डेटा एलिमेंट. सो अरे कैन बी अरे ऑफ कैरेक्टर, अरे ऑफ शॉर्ट, अरे ऑफ इंट, अरे ऑफ लॉन्ग वैल्यूज, अरे ऑफ फ्लोट वैल्यूज, अरेज ऑफ डबल वैल्यूज, अरेज ऑफ लॉन्ग डबल वैल्यूज. उसके साथ ही we can have the arrays of secondary data element also. Arrays of pointer, arrays of arrays, arrays of structure, arrays of union. I hope you are getting this. So किसी भी similar element का मुझे collections करना है तो rescue is provided by what? Array. बहुत ही fundamental aspect है and बहुत ही genuine and interesting topic है because
obviously you will be heading towards a very genuine subject in your next semester or next year, and that is what? Data structures. The 50% base of data structure lies into the arrays. So इस टॉपिक को बहुत ध्यान देके पढ़ना है, and we'll be looking into this topic up to extreme details, right? So definition के हिसाब से it's a collection of similar type of data elements, and उस हिसाब से अभी उसके definition का और एक पार्ट हम लोगों को देखना है, and that particular part is spanned across contiguous memory allocation, right? So array को define करेंगे, it's a collection of similar type of data elements spanned across contiguous memory allocation. इस सारे entities को मैं प्रूव करके रहूंगा प्रैक्टिकली भी, because we have decided in the beginning only कि theoretically कौन सा भी टॉपिक को हम लोग फाइनलाइज नहीं करेंगे जब तक हम लोग उसको प्रैक्टिकली प्रूव ना करें, राइट? सो आई विल बी शोइंग यू how it is going to collect the similar type of data element, as well as सबसे interesting part, it is spanned across contiguous memory allocation. So how to define the arrays? चलो दो बार define करते हैं. Array is a collection of similar type of data elements spanned across contiguous memory allocation. One more time. Array is a collection of similar type of data elements spanned across contiguous memory allocation. And कौन से data element को आप कलेक्ट कर सकते हो सिमिलर टाइप के? तो कौन कौन से डेटा एलिमेंट्स अपने पास है? तो वी कैन हैव द अरेज ऑफ प्राइमरी डेटा एलिमेंट एज वेल एज अरेज ऑफ सेकेंडरी डेटा एलिमेंट्स आल्सो. आई होप कि अरे का डेफिनेशन पक्का पता चला है, एज वेल एज अरे का नीड भी आपको पता चला है. So if I want to have the collection of similar type of data elements, I am in need of arrays. And array का और एक property, it is spanned across contiguous memory allocation, right? Okay. So now as usual हम लोगों ने वेरिएबल का लाइफ साइकिल देखा, right? So variable के लाइफ साइकिल में we have seen that variable goes with 3 stages in its life cycle. One is declaration of a variable, next one is definition, और उसी चीज को हम लोग कहते हैं इनिशियलाइजेशन, एंड देन वेरिएबल का यूज. फॉर एग्जांपल लेट मी मेक इट क्लियर अगेन. सो इंटीजर नंबर कैसे रीड किया था? नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, एंड दिस इज वी आर डिक्लेयरिंग इट टू द कंपाइलर दैट नंबर इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर, राइट? सो डिक्लेरेशंस के बाद क्या होता है? उस वेरिएबल के अंदर एक अनप्रेडिक्टेबल वैल्यू रहता है, and we generally call it as garbage values, right? Now उसको अगर initialize करना है तो we go with number is equal to let us say 10. So I'm just initializing that variable with the data value as what? 10. and फिर उसको यूज करना है. अलग अलग एक्सप्रेशन में यूज कर सकते हैं, प्रिंटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, स्कैनिंग के लिए यूज कर सकते हैं. सो आई कैन गो विद printf and %d एंड कॉमा करके नंबर. इस नंबर के वैल्यू को मैंने प्रिंट कर दिया, राइट? सो दिस इज माय डिक्लेरेशन, दिस इज डेफिनेशन एंड इट्स अ यूज. एंड सिमिलर टू वेरिएबल, arrays also goes with 3 stages in its life, and the first stage is declaration of array, second stage is definition as well as initialization, and the third stage of this is यूज ऑफ द अरे. तो अगर आप कंपेयर करो वेरिएबल के लाइफ साइकिल स्टेजेस एंड अरेज के लाइफ साइकिल स्टेजेस, यू विल फाइंड एग्जैक्ट सिमिलैरिटी. सो अरे को पहले डिक्लेयर करेंगे, देन विल गो ऑन डिफाइनिंग इट और इनिशियलाइजिंग इट, मतलब उसके अंदर डेटा एलिमेंट पुट अप करेंगे एंड फिर उसको यूज करेंगे, राइट? ओके. सो अभी वी विल बी मूविंग इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ टू गो फॉर डिक्लेरेशन ऑफ वन डायमेंशन अरे, right? Okay, so यहाँ पे let us try to see like what do we mean by one dimension arrays. जब भी हम लोग arrays को डिक्लेयर करेंगे, so डिक्लेरेशन को ध्यान से देखना है, इसको रीडिंग भी एक स्पेसिफिक वे है, राइट? ओके, यहाँ पे अगर मैं ऐसे कर रहा हूं इंटीजर माई array, एंड यहाँ पे नया नोटेशन आपके सामने आ रहा है, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट पेयर, एंड उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू लिखा है, लेट अस से 5, राइट? एंड अभी ध्यान से सुनना है मैं इसको कैसे रीड कर रहा हूं. माई अरे इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर अरे. सो जब भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट की रीडिंग करूंगा तो आई विल बी सेइंग इट एज व्हाट? अरेज.
right? So my array is a variable of type integer array and it holds 5 elements of type integer. My array is a variable of type integer array and it holds 5 elements of type integer, right? Okay. और एक चीज कैसे रीडिंग करना है? Key is a variable of type character array and it holds 10 element का collection of type character, right? Okay, then I'll go with, let us say, float, marks, and here I'll go with marks is a variable of type float array. It holds 10 element का collection of type float. I hope you must be getting this, how to go on reading this, right? Can you go on reading this for me? For example, integer num array is a variable of type integer array. Square bracket को read किया as arrays and then it holds the collection of how many elements? 100 elements of type integer. Definitely, जब भी आप इन elements का collections करोगे, as you are not initializing this array with some specific values, उनके अंदर जो values रहेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? Garbage values होंगे, right? ये सारी चीजें हम लोग practically भी prove करने वाले हैं. But one thing that is very clear from this discussion is जब भी हम लोग square bracket का pair use करेंगे तो we will be using the terminology as what? Arrays, right? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड, बहुत ध्यान से सुनना है कि जब हम लोग एक स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर यूज करते हैं तो वी कॉल दिस एज डायमेंशन. सो जब भी मैं सिर्फ एक स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर यूज करूंगा जैसे यहां पे किया है, प्लीज ऑब्जर्व, तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन वन डायमेंशन अरे. जब भी मैं दो स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर का यूज करूंगा तो उस टाइम पे मैं 2 डायमेंशन अरे के साथ काम करूंगा. जब मैं 3 स्क्वायर ब्रैकेट पेयर के साथ काम करता हूं तो आई विल बी वर्किंग ऑन 3D अरेज लाइक दैट. आगे के सेशन में हम लोग 2D अरेज के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं, बट अभी के लिए फोकस इज व्हाट? वन डायमेंशनल अरे. सो हाउ टू डिसाइड द डायमेंशन? अगर आपको एक स्क्वायर ब्रैकेट पेयर दिख रहा है सो दैट इज व्हाट? वन डायमेंशन अरे. एंड हियर आई एम टॉकिंग अबाउट डिक्लेरेशंस ऑफ वन डायमेंशन अरे, जहां पे रीडिंग होगा my array is a variable of type integer array. It holds 5 elements of type integer. Key is a variable of type character array. It holds the collection of 10 elements of type character. Marks is a variable of type float array. It holds the collection of 10 elements of type float, like that, right? अभी declarations के कुछ issues है compiler के साथ, that we need to understand and check it through the programming only. So let's move into the turbo C. टर्बो सी के साथ भी करेंगे, एज वेल एज वी आर गोइंग टू सी द सेम काइंड ऑफ इश्यूज अगेंस्ट VS Code also, because so when sometimes you go on changing the environment you will get different result, as C and C++ are what? Platform dependent programming languages. तो हम लोग दोनों भी आईडी के साथ काम करके चेक करेंगे कि डिक्लेरेशंस जो अरे का कर रहे हैं उसके साथ क्या क्या इश्यूज है, एंड एक बहुत बढ़िया फंडामेंटल कंक्लूजन के ऊपर उसके बाद हम लोग आने वाले हैं, राइट? ओके, सो लेट्स मूव इनटू द डिटेलिंग्स अबाउट हाउ दिस अरे कैन बी डिक्लेयर्ड इन प्रोग्रामिंग. लेट्स चेक इट थ्रू द प्रोग्राम्स. So let's move into the turbo C code and let's open one file that is form.c, and यहाँ पे I'll save it as demo15.c, right? Okay. And now let's go on checking what are the different aspect of array declaration, right? यहाँ पे मैं कर रहा हूँ integer my array, right? रीडिंग कैसे करेंगे? माई अरे इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर अरे एंड इट होल्ड्स 5 एलिमेंट्स ऑफ टाइप इंटीजर, राइट? ओके, कैसे करेंगे? कैरेक्टर, लेट अस से की, एंड इफ आई गो विथ 5, सो की इज अ वेरिएबल ऑफ टाइप कैरेक्टर अरे एंड इट होल्ड्स 5 एलिमेंट्स का कलेक्शन ऑफ टाइप कैरेक्टर. फ्लोट के साथ चलते हैं. फ्लोट
let us say marks is the name of variable and I want to go with 5 elements of type float, right? So marks is a variable of type float array, square bracket को pair को मैं कह रहा हूं arrays. Marks is a variable of type float array and it holds 5 elements का collection of type float, right? Okay. अभी एक interesting चीज देखते हैं. Do we know the sizes of this particular data type? Yes. In Turbo C, we have checked that character needs 1 byte, integer needs 2 bytes and float needs 4 bytes. तो अभी जब हम लोग इस टाइप का अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके लिए मेमोरी एलोकेट हो जाता है एंड simply we'll try to understand and check it through the programming as, let me highlight this so that it can be very clear visibility. So print करेंगे first as size of my array, right? Okay. and यहाँ पे हम लोग साइज प्रिंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स एंड यहाँ पे लिखेंगे साइज ऑफ व्हाट माय अरे, right? Okay. One more printf I need, let us say size of what is it, key, right? Okay. and %d and यहाँ पे करेंगे size of what, key. And यहाँ पे we'll go with printf and here we'll go with size of what is it, marks. marks नाम का अरे का साइज क्या है वो पहले चेक करेंगे and size of what, marks. So I'm just thinking about how much memory allocation will be there for this my array keys and marks, right? तो integer का एक element को store करने के लिए we are in need of how many bytes? So we are in need of 2 bytes when we are talking about Turbo C, right? So 2 bytes ऐसे कितने elements store करने हैं? 5 elements. तो total size इसका आना चाहिए 10 bytes. Character needs 1 byte allocation. So 5 कैरेक्टर के वैल्यूज को स्टोर करने के लिए वी नीड ओनली 5 बाइट्स. फ्लोट का एक वैल्यू के लिए कितने बाइट चाहिए? 4 बाइट्स चाहिए. तो 5 वैल्यूज के लिए कितने चाहिए? 5 into 4, that is 20 bytes का array as I need, right? Okay, so let's go on checking it. Let's ask to the compiler first. So compiler is happy with the code and जब इसको run करेंगे तो we could be able to see that size of my array is 10 bytes, size of key is 5 bytes and size of marks is what, 20 bytes, right? Okay. यहाँ पे अगर मैं ऐसे करता हूं, see the interesting changes. इसको मैंने किया long double and do we know the size of long double data type? Yes, long double data types takes what, 10 bytes, right? So 5 elements of 10 bytes को स्टोर करना है तो टोटल एलिमेंट का रिक्वायरमेंट कितना हुआ? 50 bytes. So let's go on checking it. And it says that size of marks becomes what? 50 bytes. I hope you are able to understand that how this particular declaration is having the impact on that particular size of the array, right? So इतने सारे elements contiguous memory में store होंगे, ये हम लोग जरूर देखेंगे when we will be discussing the use of the arrays as well as the initialization of the array. पर यहाँ पे one thing is very clear कि one dimensional array का declaration कैसे करना है, right? Okay. अभी इसके कुछ issues है that we need to handle and highlight over here. For example, if I do not specify how many elements का collection I need, मैंने सिर्फ क्या, my array is a variable of type integer array, but I am not telling it to the compiler that उसके अंदर मुझे कितने एलिमेंट का कलेक्शन चाहिए. तो लेट्स चेक कि कंपाइलर इज अलाउइंग दिस और नॉट, राइट? सो इसको सेव करते हैं एंड हियर कंपाइलर इज नॉट हैप्पी. सो लेट्स गो ऑन चेकिंग व्हाट द एरर इज. व्हाट आई विल डू इज ये पार्ट को मैं थोड़ा सा कमेंट कर देता हूं. मल्टीलाइन कमेंट, आई होप you must be remembering, right? Okay, save and यहाँ पे and it says like हाँ my array is unknown or 0. what is it? size. उसके अंदर कितने एलिमेंट रखने हैं कंपाइलर को ये चीज पहले से ही पता होना चाहिए. and this is the constant from the compiler side that जब भी आप अरेज के साथ काम करोगे in C and C++, you must specify how many elements are there into that particular array collections, right? Okay, so यहाँ पे फिर कैन वी प्रोवाइड निगेटिव वैल्यूज. अगर वहां पे वैल्यूज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं
तो कैन वी प्रोवाइड नेगेटिव वैल्यूज, इसको भी चेक करके देखते हैं, राइट. ओके, आई एम सेविंग दिस एंड compiling this. Compile is again not happy. It says array must have at least one element. So इस bracket के अंदर what cannot be given, negative values cannot be given. As well as one more aspect, can we give 0? Right. What is your thinking against this, right? Okay, my array is a variable of type integer array. मैं एलिमेंट का कलेक्शन करना चाहता हूं. कंपाइलर पूछ रहा है कितने एलिमेंट का कलेक्शन करना है, मैं कह रहा हूं 0 एलिमेंट का कलेक्शन करना है. It doesn't make any sense, right? Okay, so let's see like what compiler says against this. Collection के लिए at least एक element तो होना जरूरी है, right? Okay, so in this case, this compiler is very clean and it says that array must have at least one element, right? So यहाँ पे when I'm talking about this declaration constraints, इस bracket के अंदर positive value होना जरूरी है. Negative values as well as zeros will not be allowed in Turbo C. हम लोग VS कोड के साथ अलग से चेक करेंगे कि वहां पे क्या इश्यूज हैं, राइट. बट आई होप कि यू अंडरस्टूड हाउ दिस गोज ऑन वर्किंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट Turbo C, right. Now let's move into the VS code to check out कि can we get the same kind of aspect with respect to VS code or there's a slight little bit change or not, right? Okay. So here we are into the VS code and in our C assignments, I'll create a new file that is array declaration.c, right? As usual, what I'll do is form.c को पूरा का पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, right? Okay, and here I'll go with the first thing that array को declare करेंगे integer my array of type of elements what 5. Reading, चलो. My array is a variable of type integer array. It holds 5 elements का collection of type integer, right? उसका साइज को प्रिंट करके देखते हैं. यहाँ पे size of my array is %d and इस %d को रिप्लेस करेंगे with size of what my array, right? Okay, so let's go on checking कि इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है. So it says that size of my array is what 20. हाँ, जबकि वहां पे मिला था हमको 10 bytes. So you must be remembering I have shown you during the data declaration that Turbo C के साथ जब काम करेंगे तो integer takes 2 bytes, but in VS code when we are working with the integer is in need of 4 bytes memory allocation. So 5 elements, each element takes 4 bytes. So total size requirement is what 20 bytes, right? Okay, now यहाँ पे spelling गलत हुआ, typo, right? Okay, size of my array is this. Now the next thing is let us go on checking. हाँ, मैं इनके warnings को निकालता हूँ. So what I'll do is I'll make the comment onto this so that other warnings will not come into picture, right? Okay, so here I'll go with can I keep this blank? Let us go on checking this. Turbo C ने इसको error दिया था. So what is the aspects into the VS code? Let's go on checking this, right? So it also says that error array size missing in what my array. So किसका कंपल्शन है कि अरे के ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स का होना जरूरी है. दिस पर्टिकुलर कंपल्शन इज लेड बाय व्हाट कंपाइलर. कंपाइलेशन एरर है, राइट? ओके, सो नाउ कैन वी पुट नेगेटिव वैल्यू इनटू दिस? लेट्स गो ऑन चेकिंग दिस. टर्बो सी इसको एरर दे रहा था, राइट? ओके, सो लेट्स गो ऑन चेकिंग इट. And it says that again, right? Size of array, my array is what? Negative. It's not allowed. तो सेम कंसेंट, राइट? एंड वहां पे हम लोगों को फिर पॉजिटिव नंबर देना है एंड वी हैव सीन दैट 0 इज ट्रीटेड एज पॉजिटिव. सो देखते हैं 0 के लिए इज इट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ एरर और नॉट, राइट? ओके, एंड इट सेज size of my array is what? 0.
सो ये एक डिफरेंस है जो टर्बो सी में आपने देखा 0 है, तो टर्बो सी का कंपाइलर बीइंग अ वेरी स्ट्रिक्ट कंपाइलर एट लोअर लेवल वर्किंग एंड इट सेज दैट 0 एलिमेंट का कलेक्शन क्यों करना है, सो द अरे साइज मस्ट नॉट बी 0। पर यहाँ पे जब आप लोग वीएस कोड के साथ पॉजिटिव नंबर दे रहे हो 0 के साथ भी, देन ऑल्सो इट्स फाइन, बट इट डजंट मेक एनी सेंस टू हैव द कलेक्शन ऑफ व्हाट 0 एलिमेंट्स विद द हेल्प ऑफ व्हाट अरे। बट वन थिंग इज वेरी श्योर कि जब भी हम लोग अरे को डिक्लेयर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स देना कंपल्शन है, एंड सच काइंड ऑफ कंपल्शन इज लेड बाय कंपाइलर एंड कॉन्सेप्ट इज नोन एज स्टैटिक अलोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू अरे। एक बार फिर से, compiler is putting you onto this compulsion and this concept is known as static allocation. Compiler का restrictions onto the size of the elements into the array concept is known as static allocation, right? So I guess कि you must be knowing now what are the declaration aspects. एक बार उसको summarize करते हैं. So when we are declaring the array, what is the constraint as integer my array? Right. Reading my array is a variable of type integer array. It holds 5 elements का collection of type integer, right? इस bracket के अंदर if you are not putting any number, this is not allowed. इस bracket के अंदर if you are putting negative number, this is not allowed. And इस bracket के अंदर अगर आप positive number बन के 0 को भी put up कर रहे हो, this is also not allowed, right? VS Code में इसके लिए syntax error नहीं मिल रहा है, but it doesn't make any sense to have the collection of what 0 element. And turbo C के अंदर इन तीनों के लिए मिला था what compilation syntax error. Now this particular constraint that we must have the size of the array elements, मतलब array के अंदर कितने elements होना चाहिए, and this compulsion is led by compiler. Concept is known as static allocation. Concept is known as what? Static allocation, right? Okay, so this is what we can call it as declaration of the arrays. Now I hope that you understood how the array can be declared, and we have checked all these aspects through the programming executions also, right? So this is all about declarations of the arrays. उसके साथ और एक चीज हम लोगों को पता चला, जब एक स्क्वायर ब्रैकेट पेयर है तो दैट इज 1 डायमेंशन, जब 2 स्क्वायर ब्रैकेट पेयर है दैट इज 2 डायमेंशन, लाइक दैट. तो अभी के लिए तो फोकस चल रहा है ऑन टू व्हाट 1 डायमेंशन अरे, एंड हियर वी फिनिश विद डिक्लेरेशंस ऑफ 1D अरे. इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशंस में मिलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू फ्यू मोर लाइफ साइकिल स्टेजेस ऑफ 1 डायमेंशनल अरे. तब तक के लिए कीप स्टडिंग. थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच.